This is some plane 2x1 plus 3x2 plus 4x 3 minus 9 equals to 0 or minus 12 equals to whatever. This is some plane. This is the equation of a plane in 3D. I'm assuming my features are three-dimensional, x1, x2, x3. And this is W1, this is W2, this is W3, and this is W0 or P. Clear? If you want to write this in that way, then my W is 2, 3, 4, minus 12. and B is minus 12. Okay. In this particular case. Yes? And this is the equation of the plane, which is W transpose X plus equals to 0. That's it. Order change हो सकता है? Yes. X transpose 4, 3, 2 लिख सकते हो? 4, 3, 2? नहीं आपने W0 से कहा ना? हाँ जी, ठीक. This is B. This is W1 to ठीक हो. W1 we conventionally define as the parameter that will be multiplied with the feature 1. W2 that will be multiplied with the feature 2 and so on. ठीक हो. So whatever. Is that okay? Okay, tell me some point that lie on this plane. Exactly on this plane. Tell me some point, tell me three numbers, x1, x2, x3, that satisfy this equation, that lie on this plane. 0, 0, 3. Sorry? 0, 0, 3. 0, 0, 0, 0, 3. 0, 0, 3. Yes. 0, 0, 3 lie on this plane. Yes. 0, 0, 3. Okay, 6, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 2, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 4. नहीं sorry. 0, 4, 0. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Let's have 1, 2, 1. So now you know that how to find out the points that lie on this plane. Okay. Now tell me a point that does not lie on this plane. 3, 5, 3, 5, 6. 3, 5, 6. So 2 times 3 plus 3 times 5 plus 4 times 6 minus 12. And this number is what? Not 0. This is yes. So one high level explanation is it is not 0. Like whatever that number is. 33. So this number is positive, yes? Which means this lie on, let's say, if we assume an orientation of the plane this way, let's say this lie upper side of the plane. Now tell me a point that lie on the other side of the plane. 0, 1, 0. 0, 1, 0, okay. Yes. Or 0, 0, 0. Yes. Okay, that lie on the other side. So if the point lie on the other side of the plane, this number will be negative. Yes, no? Yes. So far so good? Great. Okay. This point does not lie on this plane. Yes, sir. Yes? So it is away from the plane. So obviously there will be a distance of this point from the plane. If it lies on the plane, then the distance is 0, otherwise there is a distance. And let's assume the signed distance. If it is on the upper side of the plane, then its distance value will be positive. If it is on the other side of the plane, then the distance value will be negative. Yes? So how to find the distance of this point from this plane? प्लेन वाला फॉर्मूला होता है. Yes. वो पॉइंट पुट करके डिवाइड बाय अंडर रूट समथिंग होता था 2 square plus 3 square plus 4 square. So the formula is this. It is 2 times 1 plus 3 times 0 plus 4 times 1 minus 12 over 2 square plus 2 square 4 square under root. 4 square. और अगर मैं इसका एब्सोल्यूट ले लूँ तो डिस्टेंस मिल जाएगा. अगर एब्सोल्यूट नहीं लूँगा तो मुझे साइन का डिस्टेंस मिलेगा. पॉजिटिव वाले साइड पे नेगेटिव वाले साइड पे. सर ये माइनस 12 क्यों कर दिया? माइनस 12 भी है. That's correct. We can write that formula right now, but that's the formula. Sorry. Yes? Yes. Make sense?
Yes. Clear? डिस्टेंस निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए एक से नहीं ये प्लेन से किसी की कहा है प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेगा। सो प्लेन गिवन है, Okay. एक पॉइंट है वो प्लेन से कितना होगा? सही है? यस Is that right? Yes. What will happen अगर मैं इस नंबर से डिवाइड ना करूं? अच्छा ना डिवाइड करूँ हाँ मतलब जो कांस्टेंट ही है एक कांस्टेंट ही है नहीं मिलेगा बस अगर मैं इस नंबर से डिवाइड ना करूं what will happen? तो एक कांस्टेंट है जो नहीं होगा बस बेसिकली आप उसकी जो है ना आप इसको वेरियंस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? स्केल बढ़ जाएगा उसकी वेरियंस उसमें ज़्यादा होगी, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। ठीक है कि बेसिकली जो ये सिस्टम डिवाइड कर रहे हैं ये बेसिकली उसके जो पर काटने कॉन्सेंट्रेट पर काटे जा रहे हैं उसके पता नहीं है नहीं रेगुलराइजेशन शायद इसमें उस तरह से यूज किया हाँ मुझे तो पता नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे ना जो कि हम नहीं करेंगे तो उसमें ये W आई मीन ये जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ये इंक्लूड हो जाता है यानी जब आप डिस्टेंस निकालते हैं यू डिवाइड बाय दिस नंबर ऑल एम आई सेइंग इफ यू डू नॉट डिवाइड बाय दिस नंबर व्हाट विल हैपन लेट्स सी if you just plug in that thing here and some number comes out अगर नंबर 0 आ रहा है we are okay अगर नंबर 0 नहीं आ रहा तो कोई नंबर एक आएगा and that number should be I mean why not के उसको परफॉर्म डिस्टेंस के तौर पे लेंगे make sense अच्छा the problem is the following let's say I have this equation you will notice that this is exactly the same equation. oh This is exactly the same plane, not parallel ones. They're exactly the same. So they are same. If we do not divide by this factor, then one point it is away from this plane. I mean, it has distance 5 from this plane, and then it has distance 10 from the same plane. मेरी बात समझ आ रही? Because ये जो scale factor है ना इसका इसको आप चेंज कर सकते हैं सारे को and still that will be the same equation. So you have to divide by the scale you have chosen. Otherwise the distance will be बट सर उस सिनेरियो में तो उससे डबल ही होगा किससे? नीचे वाले फील्ड से। तो ये अगर आप एग्जैक्ट अगर आप कहते हैं कि यार एक ऐसा प्लेन लेके आए जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हो 10 तो एक मतलब प्लेन ये लेके आता है उसका डिस्टेंस है 5 तो आप दूसरा जो है वो जस्ट इसको डबल कर दो कि ये वो प्लेन है जिसका डिस्टेंस है हालांकि प्लेन तो एक तो लेकिन उसको डिवाइड करने से फर्क समझ नहीं आ रहा क्या फायदा। देखिए मेरी बात सुनिए अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते इसको and let's say this is the point that is of distance 5 with this plane Yes. and the goal is to come up with a plane that has distance 10 with this particular point. Somebody may come up with this plane and say my plane is better than this one. हालांकि ये सही है लेकिन अगर हम कहते हैं भाई वो रिड्यूस फॉर्म में समथिंग लाइक जैसे हम फ्रैक्शन को कहते हैं इस तरह से कोई कॉमन है तो निकालें बार में जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ अच्छा मैं वो फ्रैक्शन की तरफ आ रहा हूँ वो मैं फ्रैक्शन की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आ रही ओके Is that okay till now? Yes. Okay. Okay, so I'm moving towards the following thing. The distance of point x, from a particular plane is the following. Yes? यस So far so good? और ये W normal लिखी हुई है ये. This is norm of the W. That's the distance of point x from a particular plane. और ये साइन distance है अगर आप zoom लगा दो ये distance जो है. Make sense? I want the following. If
then d of xc should be much larger, if yc is equal to 1 and the distance should be much larger in the other direction. That's my goal. That's my goal. Perfect हो गया जी, perfect हो गया। Distance. So, अगर मेरे पास कोई प्लेन है तो उस प्लेन का कोई क्लोजेस्ट पॉइंट नहीं होगा जो उससे क्लोजेस्ट होगा। आई वांट, अगर वो प्लेन बेस्ट प्लेन है तो जो उसके क्लोजेस्ट पॉइंट है उसका उससे डिस्टेंस जितना बड़ा हो सकता है। यस, एंड दैट इज डिफाइंड एज मार्जिन। सो मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसके क्लोजेस्ट पॉइंट से उसका डिस्टेंस इज मैक्सिमम। दैट इज माय गोल। सो फॉर सो गुड? यस, नो? अब मैंने प्लेन भी ढूंढना है और जब प्लेन आना है फिर उसके कोई क्लोजेस्ट पॉइंट आना है। समझ आ रही है? मुझे ना कोई क्लोजेस्ट पॉइंट गिवन है ना कोई प्लेन गिवन है। यस, नो? सो द प्रॉब्लम, ओ बाय द वे, इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है? इसको भी जरा देख लेते हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन है a and b and I want this fraction to become maximum. I want maximum. इस फ्रैक्शन को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ। क्या करूँ? So there are several ways. एक तरीका ये है, अगर मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ, एक तरीका ये है कि a को बड़ा करना शुरू कर दें और b को छोटा करना शुरू कर दें, and do this on both ways. So increase the numerator and simultaneously decrease the numerator, and the fraction will be maximized. This is one way. Equivalent way, exactly equivalent way, is the following. Fix a, decrease b. It may take a little longer to converge, but it will give you exact maximum. Fix the numerator and decrease the denominator, and then you will maximize the fraction. Another equivalent way is Increase a constant. fix this. These are all equivalent. These are all equivalent. You can choose any one of these, and you will end up by maximizing the fraction. Yes, no? Yes. We will use this one. I can use any of these. This one is very simple. Make sense? Which means the following. I will fix this thing. By fixing, I will fix this thing to any constant. I will not allow this number to change. Which means I will put this number equal to something and I will say, okay, always you have to stay in this number. Whatever that number is, I have to fix this to something. Not necessarily fix it to this number, fix it to that number. Fix it to 5, fix it to 7. So W transpose plus B should always be 7. Fix it. It should not be 6.5, it should not be 7.5. And now decrease W norm. Make sense? So fix करने के लिए आप कौन सा number choose करते हैं? Arbitrary. You can choose any, but fix it. Make sense? One choice and beautiful choice is the following. W transpose X plus B, this is equal to 1. Yes? And minimize W norm. So, you have to come up with a W that respect this, come up with W and B such that W transpose X plus B, and let me fix a particular point, for a particular point, let's say. Let me first fix a particular point, let's not change the come up with W and B such that the numerator does not deviate, it stays fixed, and the norm of W is minimized. Make sense? So you have fixed the numerator. For all the one thing, it doesn't change anything. You fix it. You fix it to a number. Do not allow it to change. अगर तो W ऐसा आता है जो numerator को भी छेड़ रहा है और खुद भी minimize हो रहा है उसकी norm, then you are not in this domain. Right. Make sense?
बिल्कुल ठीक बात. So allow numerator to stay fixed and then play with W. फादर क्या सर? Sorry? हमें इसका ये वाला केस आप क्यों ले रहे हैं? यानी ठीक है मुझे समझ में आ गई वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. Its derivation is very simple. अच्छा ठीक है. And this is equivalent to the other two. समझ में आ गया. So you pick one which can easily be derived All right. as certain properties. Yes, no? Yes, sir. Clear? Yes. Allow me to write this TC as 2 times YC minus 1. Now, if you see, if YC is equal to 0, then TC is equal to minus 1. If YC is equal to 1, then TC is equal to 1. So I'm just changing the labels from 0 to 1. I'm using them as minus 1 to 1. Make sense? अब तक मैं जो labels use कर रहा था class labels वो थे 0, 1. अब मैं use करूँगा minus 1, 1. और अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा क्यों करते? You can always convert your labels using this formula. और start में जो 0 थे उनको minus 1 कर रहे हैं. Not a big deal. Make sense? ये कहाँ से आया दोबारा मिलता है? कोई लेबल है. ये जो पॉइंट है उसका कोई लेबल है. अच्छा. उसका कोई लेबल है. ठीक है? अच्छा. So मैं चाहता ही हूँ कि अगर ये लेबल 1 है तो 1 ही है लेबल 1 और अगर ये लेबल 0 है तो इसका लेबल minus 1 होगा. अच्छा. So I'm changing the labels from 0 to 1. 0, 1 से मैं minus 1 आ गया. Make sense? और ये आप start में भी कर सकते हैं. बिल्कुल start में कि मेरे पास labels थे ही minus 1, 1 की फॉर्म में. या फॉर्मुलेशन के अंदर जाके कह सकते हैं कि नहीं मेरे पास labels तो से 0, 1 की फॉर्म में and I apply this transformation and these are the new labels now. Make sense? ठीक हो गया. So the easiest way is कि मेरे पास start में label जो थे वो minus 1, 1 की फॉर्म में है. Yes? So can I assume that YC or Y belongs to minus 1 or 1? Otherwise, अगर ये 0, 1 से belong करता है तो you create new labels using this. Make sense? A little more modifications and then we will be very close to this. I'm writing this fixed factor as 1. If YC is equal to 1 and the P transpose XC plus B should be minus 1 if YC is equal to minus 1. Make sense? I'm fixing the numerator and decreasing the divider or the denominator. अगर वो क्लास -1 से बिलोंग करता है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिवली बड़ा होना चाहिए. तो ये जो मेरे न्यूमरेटर है -1 फिक्स करना चाहिए या नेगेटिव नंबर, सम नेगेटिव नंबर. यस नो? इज दैट ओके? Yes. देखिए अगर मैं प्लेन के इस साइड पे हूँ तो ये मैं प्लेन शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना क्लोजेस्ट पॉइंट से. अगर ये पॉजिटिव 1 है तो ये डिस्टेंस 2 हो जाना चाहिए, 5, 7 बढ़ना चाहिए. ये तब होगा जब मैंने न्यूमरेटर 1 सेट किया है क्योंकि जो डिवाइड हो रही है चीज वो तो हमेशा पॉजिटिव है. दैट्स अ नॉर्म. मेक सेंस? अगर ये पॉइंट इधर है व्हिच मींस इसका डिस्टेंस नेगेटिवली बड़ा होना चाहिए. सही? तो अगर मैं न्यूमरेटर को -1 सेट करता हूँ एंड नाउ आई डू दिस, now the distance will become -3, -4, -7 and so on, which I need. Clear? Yes, sir. So fix the numerator to be a positive number, any positive number, if you want to maximize the margin from class 1, and fix it to be a any negative number if you want to maximize. अब closest point हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, वहाँ से अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे दोनों तरफ से आएगा. लेकिन that's the formulation. If the closest point is known, that's the formulation. Does that make sense? Yes? No? I can pause here if you, I guess you're confused. The pause is confused. नहीं कुछ और क्या होगा? ठीक है. Should I move on? Yes. Okay, so I don't have any closest points for here. By the way, इसको एक और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है. इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है. आप बताएं. This can be written as W transpose XC plus B is equal to DC.
times yc, and that should be equal to 1. Those both things go there. अगर ये 1 है तो ये भी 1 है तो इसका प्रोडक्ट भी 1 रहेगा। अगर ये -1 है और ये भी -1 है तो इसका प्रोडक्ट भी 1 रहेगा। Make sense? So अगर वो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए। I'm saying this. Yes, sir. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। I'm saying this. If label is positive, W transpose plus B should be positive and a fixed number. If label is negative, W transpose B, W transpose X plus B should be a negative number, a fixed number. And then start normalizing, start minimizing W norm. Sorry. Is that okay? Yes, no? Yes, sir. Okay, and now I'm going to write this in a little formal way. Is it yes? So far so good? समझ आ रही? Yes, sir. Yes. Very nice. W norm subject to the following conditions. Y I W transpose Xi plus B should be equal to 1. सही है? So you always have to follow this condition. But you have to follow this condition for which this thing is minimum. Because आपके पास कभी भी closest point तो थे नहीं, कोई closest point आपके पास तो नहीं था. So for example आपको W लेके आते हैं, आपके पास W आता है, W, सही है? अब आप कहते हैं कि अच्छा वो point जो closest होगा, मैंने उसका distance maximize करना है, ऐसे ही? अच्छा वो point जो closest है ना, उसका जो W transpose plus B है वो 1 होता है, let's say, और अब मैंने W को minimize करना है, यानी W की norm को मैंने कम करते चले जाना है. बाकी सारे points तो जानते हैं. For example मेरे पास एक W आ चुका है, मेरे पास एक W आ चुका है, तो उसकी कोई norm होगी, let's say this norm is alpha, कोई norm होगी, सही है? And this is the closest point for which WC, W transpose XC plus B, this is the closest point for which this is 1. जो वो points जो closest नहीं है उनके लिए ये value बड़ी होगी, अगर मैं W fix करूँ. Make sense? अगर मैं W लेके आता हूँ यानी दूसरी वे में जाऊँ, अगर मैं W fix कर दूँ, if this is the W, then the points that are closest to the plane, for those points, this number will be 1, and the points that are not the closest points, for those, this number will be larger than 1. Make sense? Yes, no? तो इसको बिल्कुल इस तरह से सोचना है, do not have my closest point, करें सिर्फ ये, कोई एक ऐसी बाउंड्री लेके आए, कोई एक ऐसी बाउंड्री लेके आए such that कि उस बाउंड्री से जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, उसका ये वाला नंबर 1 हो, and then minimize this one. तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं जो क्लोजेस्ट के अलावा हैं, they will be having this number larger than 1. Does that make sense? Because हमें क्लोजेस्ट पॉइंट नहीं पता, हमने तो बाउंड्री रखनी है, तो हर पॉइंट हमने बाउंड्री रखनी है, ये बाउंड्री है तो W आ गया, ये W है, ये प्लस B, ये W है, ये B है. अच्छा इसके क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा ये वाला? इसके क्लोजेस्ट पॉइंट से W ट्रांसपोज प्लस B 1 होना चाहिए, दैट्स द कंस्ट्रेंट. W आ गया, सही है, वो 1 आ गया. अब बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो हैं, डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा तो W फिक्स कर दो. अब मैं एक और बाउंड्री लेके आता हूँ, उसके क्लोजेस्ट पॉइंट ये है, इसके लिए ये कम होना चाहिए. अब जीतेगी वो डेफिनेटली जितने जो हर क्लोजेस्ट पॉइंट है उसका ये जो न्यूमरेटर ये तो 1 दे रहा होगा, जीतेगी वो बाउंड्री जिसकी W नॉर्म कम होगी. For all possible boundaries you come up with this constraint,
The closest point will be evaluated as 1. The closest point will be evaluated as 1. The winner will be having the least W. W naught. Is that okay? Yes. Closest point कैसे? Sorry? Closest point कैसे? ये वाला closest point है, इससे हमने इसकी compute कैसे करें? So the point which is the closest has the following conditions. The point which is the closest has the following conditions. It must be the point which is closest has numerator this. तो हम सारे points कैसे करेंगे? Yes. Because we do not have a closest point beforehand. The point which is the closest has this number 1. Obviously, the other points that are away from this will be having this number larger. Make sense? और ये हमने फिक्स की थी अगर because we want to maximize this fraction. Is it possible कि हमारे पास कोई भी 1 आए सारे 2 से बड़े-बड़े हैं? नहीं ये वन रखना ही रखना है मैं इसकी स्केल चेंज कर दूंगा. ये अगर 2 आ रहा है मैं इसकी स्केल इसको 2 को चेंज करूंगा तब ये 1 हो जाए. सर एग्जैक्टली इसी चीज के अंदर कंफ्यूजन है कि इसको मैं 1 कैसे कर सकता हूँ? वो तो पहले से डाटा तो पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ नहीं पड़ा हुआ. इसको मैं 1 कैसे W को स्केल करूंगा. फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ रही है मेरे पास WC W ट्रांसपोज X C plus B. ये वैल्यू आ रही है somehow 2. सही है, वैल्यू somehow 2 आ रही है, कोई W और C की चॉइस है. तो मैं करूंगा ये my W will be half W and my B will be half B. And then I will get the, क्योंकि I have to follow this constraint. Yes, no? Yes. Is that okay? मुझे पता है ये मैंने आपको काम कर रहा है, so I'm going to remove this man. ये मैंने छेड़ा है ना? Yeah, I'm going to remove it. Is this okay? Now things will make much more sense to you as you go. Minimize W naught subject to the constraint that yi times W transpose xi plus b is greater or equal to 1 always. That's it, no min required. So for the points that are closest, it is 1. For points that are not closest, greater than 1. No need to write this min here. If the minimum is 1, the rest are larger than it. So then we can write this way for all data points. Yes, no. Yes. अच्छा यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा. ये 1 का मतलब ये नहीं है कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस 1 यूनिट का है. ऐसा नहीं है. You fix this number. You can fix this number to 5, 7, whatever. जो इसका मतलब सिर्फ ये है जो क्लोजेस्ट पॉइंट है ना उसका न्यूमरेटर फिक्स करके डिनोमिनेटर को मिनिमाइज किया हुआ है. Which means जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसके साथ डिस्टेंस को मैक्सिमाइज किया गया है. And that is some margin. It has no connection with unit 1. मेरी बात समझ आ रही? Yes, no. We are ensuring कि वो जितना यूनिट पॉजिटिव वाली साइड दूर होगी उतना ही नेगेटिव वाली साइड दूर होगी. Yes, it is. क्योंकि अगर किसी एक साइड पे मार्जिन होगा तो वो शिफ्ट कर देगा. Make sense? तो यहाँ से बात बहुत कंफ्यूजन डाल दी कि ये सिर्फ ऐसे कह सकते थे कि हमने सिर्फ इस फैक्टर को देखते उससे कम होगा उसको उठा दिया. कौन सा फैक्टर? ये डिवाइडेड बाय W ना नहीं लगाया था हमने. Yes. मैंने अपने के बजाय इधर लगा देना. इसके साथ ये सब नीचे सब लगा देना. शुरू में इस पूरे सब लगा देना तो फिर ठीक रहेगा. This is. Yes. जिसका मिनिमम मार्क्स आया सबका तो वो हमारे पास इधर होगा. Yes. इसको मिनिमाइज करना है. मान लो सबका जो सबसे मिनिमम होगा ना वो हमारा इधर होगा. नहीं जो मिनिमम होगा हमारे पास सब पॉइंट्स. Okay, I'm just adding to your point. Minimum of this should be maximized. Yes, sir. So minimum of this and let me write I. So compute all of them. Compute the minimum. And minimum of this should maximize the minimum because that's the distance. So the minimum distance is as max as possible. Come up with this. Yes. And this problem is given with this.
सही है? So yes, so that's a good intuition. You can write it this way as well. Clear? मिनिमम को जो डब्ल्यू है उसको मिनिमम करेंगे और वो बार प्लान बनाने जाना इसमें हम कैसे इस पॉइंट को करेंगे तो आपके पास डब्ल्यू कोई आज का है तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें दोबारा से देखें this is not that trivial. दोबारा से देखें मेरे पास एक फ्रैक्शन है a over b, मैंने उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? अच्छा, अब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं उस फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली करने सेंस में देखो, उसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ उस पॉइंट के लिए जो बिल्कुल उसके करीब है। अच्छा, जो पॉइंट बिल्कुल करीब है ना, उसके लिए मैं न्यूमरेटर फिक्स करता हूँ 1 या 5 या 10, ठीक है? न्यूमरेटर के लिए अब मैंने चूंकि इस फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है जिसका न्यूमरेटर मैंने फिक्स कर दिया 1 2 3 whatever, I start decreasing w, I start decreasing the denominator, I start decreasing it to maximize it. समझ आ रही है? जो पॉइंट्स उसके करीब नहीं थे यानी मिनिमम से अलावा वाले जो पॉइंट्स थे, अगर उसके लिए मैं वो उसके लिए जो अगर मैं w फिक्स कर लूँ तो न्यूमरेटर विल बी लार्जर देन 1, अगर w फिक्स कर लूँ, अगर w फिक्स ना करूँ देन जो न्यूमरेटर है दैट विल बी सॉरी, सो दिस इज कंफ्यूजिंग. This is ये मैं इनकी बात पूरा लेके आगे चलता हूँ. I want minimum of it to be maximum. बिल्कुल मैं इनकी बात लेके चलता हूँ. I want minimum of it to be maximum. Now, how can I achieve this? How can I achieve this? Number one, I try out all the points one by one here and evaluate this fraction and so on. Number two, what I really do is for every point, I fix this to be 1, I fix this to be 1, and I start decreasing W0. So I fix this number to be 1 and I start decreasing W0. कुछ कंफ्यूजिंग है, मुझे सही तरह से पता था और मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ. दोबारा से we have some closest point. Let's say we do not have the closest point right now. We do not have the closest point right now. Let's say we have closest point, then formulation look like what? Let's say we have closest point. If we have closest point, then W transpose XC plus B equals to 1. If we have the closest point. And this should be equal to 1, and we start minimizing this. If the closest point is given, then from the closest point this should be 1, and we start minimizing this one. अब अगर closest point given नहीं है तो हमें कैसे चलना है? For the closest point this number is 1. For the point that is not closest, this number is greater than 1. Exactly. जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे to make it 1. और उसी नंबर से W नॉट को भी हम डिवाइड कर लेंगे. नहीं इतना if we have जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ पहले मैं अपनी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करूँगा. If we have the closest point, for the closest point we set this number to be 1 and start decreasing this. Make sense? Yes, sir. And for the same W, because that was the closest point. Yes. आगे से मुझे समझ Let's say XC is the closest point. Let's say XC is the closest point. Let's say this is giving us the closest point. What we really want is
yc times w transpose xc plus b equals to 1. And for this particular point, this is the number so that wc, w transpose xc plus b over w is minimum. This is minimum. If xc is the closest point, then this number is minimum. Yes? If xc is the closest point, if xc was the closest point, then we fix this number to 1 and we minimize this. Yes? अगर xc closest point है, तो हमने numerator fix कर दिया and we minimize this. Yes or no? After minimization, for the closest point, this number was 1 and w was some w जो भी w आया था, and xc is the closest. Now having that w जो closest point के लिए इसको 1 कर रहा है, and that w is found for the closest point. Why I w transpose xi plus b must be greater or equal to 1 for the other points. Otherwise, this distance is not minimum. Yes. दोबारा से देखें. If xc is the closest point, then yc w transpose over this number is minimum. Yes. If x is the closest point, then this fraction is minimum. Make sense? And w is the vector that actually minimizes this fraction. Make sense? Yes, sir. If for the closest point this number is equal to 1 and this is the w, if for the closest point this is equal to 1 and that is the w, then for the points that are other than the closest point, if this number is not greater than, if this number is smaller than 1, if this number is smaller than 1 for any other point, then this is not minimum. Yes. Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. हम w चेंज करेंगे और सारे पॉइंट्स को दोबारा. Yes. If, what I was thinking, if for the closest point, this is equal to 1 and this is a w, then this is the minimum for the closest point. If for any other point, this value is smaller than 1, if this value is smaller than 1, then this is not the minimum. So that's what I'm saying. अब ये मुझे तो clear है. Is that clear to you as well? Yes. So that means this makes sense. It should be greater or equal to 1. It will be 1 for the points that are closest and larger than 1 for the next points. सही है जी? सिर्फ एक और चीज और उसके बाद मैं छोड़ दूँ. Yes sir. Just one. Minimizing W norm is the same as minimizing square of it. Yes, sir. So अगर आप एक नंबर को मिनिमाइज करना है, अगर आप उसको स्क्वायर को मिनिमाइज कर देंगे और सही है जी? Yes, no. इसके साथ रेगुलराइजर की जरूरत है. इसके साथ रेगुलराइजर की जरूरत है. रेगुलराइजर में ऐड करेंगे क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि इसमें रेगुलराइजेशन की जरूरत नहीं है. एक्चुअली ये जो आप मिनिमाइज करेंगे सो डिस्टेंस फाइंड करने के प्रोसेस में रेगुलराइजेशन होगी. मेक सेंस? यस नो? Yes, sir. Okay, I will discuss this in detail in the next class. So regularization for the next class.